Gentlemen, with a huge round of applause, I request Ambassador Dr. Deepak Vohra to kindly grace the dais. I want a resounding applause while he is taking the dais. I request him to kindly be on the dais, please. अब ऊपर आइए सर. चलिए आपने कह दिया तो आ जाता हूँ. Thank you so much. My औकात है. I request you to kindly allow me a moment while I put on record your excellent profile. अगर आपने इंट्रोड्यूस करना है भारत माँ का एक साधारण बेटा, that's it, nothing beyond. भारत माँ का एक amazing बेटा. Thank you. Ladies and gentlemen, to start with it, I request Dr. Vohra to kindly come up on the stage and welcome our amazing guest for the day with a flower bouquet. Dr. Vohra has been tirelessly running across for making this NATCOM, and there is an entire committee of MC running behind. Thank you very much, Dr. Vohra. Thank you, Dr. Vohra. Thank you. Thank you very much. Welcome you, and we are eager to listen. आप नीचे छोड़ के आए हैं, मास्क आप ही में. मैं आज बोला आपसे. This center, the nation's capital. Our patron is His Holiness. On behalf of His Holiness, may I give you thank you. Right. शुरू करें मैं साहब मैं क्या हूँ नीचे आ जाऊँ. थैंक यू सर. वही मेरा पहला पढ़ा है. शुरू कर दीजिए स्लाइड शो. I have your permission to start. May I? Thank you very much. Are you able to see it all? Great. My name is Deepak. मैं भारत का राजदूत हूँ और 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार. ना विशेष हूँ ना तो नहीं सलाह लेता है. बट हूँ आपका बिकॉज मुझे बहुत मिला. मैं मिला था. I just come back from the United States last night. Conference team. अगर मुझे नींद आ जाए पानी लिख लीजिए. So for the next 20 minutes, if you could please do what I do, which is, we have over 100 crore mobile phones in it. So आप सबके पास स्मार्टफोन मोबाइल आप कृपा करके मत कर दीजिए इसलिए फिर उसको ऑफ. Now this is a joke from my side. Don't take this seriously. It's a message from Field Marshal Munir of Jihadistan to Donald. I want you to listen to the world's greatest broadcast. Just one sentence from Oprah Winfrey. मैं मिला था, कहाँ मिला था उनको? On the 25th of February, Mahapur. I looked at her, मैं मिला मुझे अमेरिका में पूछे था. मैंने कहा बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? So she says, why? So ये तो सनातनी है. This is a Hindu festival. Well, I am a Sanatani. इसकी बात है काफी सनातनी. You heard the name Oprah Winfrey. Listen to what she says. This is a new India. This is her words. And now very quickly we'll go through some of these images. I took these photographs in various European and American, and in the United States and various European countries. देखिए ये सब भारत की फोटो है. What you just said. आप लोग देखते हैं विदेश से जो आते हैं अफ्रीकन कंट्री का स्पेशल एडवाइजर इन 3 अफ्रीकन कंट्री. They say, why do you call yourself a developing country? After all. So welcome आप सबको, sons and daughters of India, daughters and sons.
लिव हम लोग अपनी सच्चाई में जीते। भगवान बुद्ध ने कहा था अपने आप से झूठ मत बोलो। My father was a Pathan from Kashmir, Afghanistan. Mother belonged to a Sikh family. सरदार और पठान का खून जब होता है बड़ा खतरनाक होता है। पिछले वाली मुनैया को बता दो वो कि पठान भी है और सरदार भी है। I'm 74 years young and I'm still very good looking. सारी मैडम लोगों को, all the ladies उनको मैं कुछ कहता हूँ, which is बचना ऐ हसीनो। Victor Hugo, ये जो फ्रेंच दार्शनिक थे, since I studied in France, फिर आवाज नहीं आ रही है? ये चीनी माल मत रखा करो, So they can't get it. He said no power on earth can stop an idea whose time has come. I studied at the Sorbonne, इसको पढ़ते थे. Take it from me. Oh, can you hear me now? Yes. उन्हें तेलुगु ने ये कहा था, take it from me, daughters and sons of India. भारत is an idea whose time has come. हमें कोई रोक नहीं सकता. ताली तो बजा दीजिए इसके लिए. ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट है, अलीसा आयरस, मेरी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं है. उन्होंने ये किताब लिखी है, Our Time Has Come, How India is Making Its Place in the World. All right. अलीसा आयरस इनका नाम है. ये किताब बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में. This is not just Bharat's decade. ये भारत की सेंचुरी है. ये मैंने नहीं कहा सर. We haven't paid this woman to write this book on her own. भारत आके उसने देखा. Now I have a question here. हम लोग सब सनातनी हैं, सब रामायण जानते हैं. एक बार मैंने किसी से पूछा था, आपको अभी बताता हूँ कि जामवंत इफेक्ट में क्यों कहता है. जामवंत आप सब जानते हैं, was the bear, भालू का राजा, जिसने हनुमान, जब हनुमान बहुत डिप्रेस थे, भोजन नहीं खा, जब सुसाइड, जामवंत ने आके उनकी ताकत उनको याद कराई थी. That is the big story of the Ramayana. और टाइगर ये भी चीनी मारा आपका. Now I'd like you to listen to this one line that Narendra Modi spoke. और मैं सुन रहा था, this was 6 years ago in a place called Patan in Gujarat. सुनिए क्या कहता है. हमारा सिद्धांत है. For 6 years I did not understand कि हमारा कब से सिद्धांत है कि हम घर में घुस के मरेंगे. हमारा सिद्धांत तो मुझे सिखाया गया था स्कूल कॉलेज में, कोई तमाचा मारे आप बोलो एक और मार दे, कोई पेट में लात मारे आप बोलो पीठ में भी. हमारा सिद्धांत ये कब से था. It's only when I went for the Mahakumbh, I was staying at the dinner Akhada. A Prime Minister was there with Secretary side. I was with the Aam Janata. And there was a Mahapurush who came. मैंने उनसे पूछा, महाराज ये क्या बोल रहे हैं, हमारा सिद्धांत कब से है. And then he said, सारी रामायण आप जानते हो, अल्टीमेटली हनुमान जाके ढूंढ लेते हैं सीता माँ को, वहां से वापस आने से पहले क्या करते हैं. मैंने कहा महल को आग लगा देते हैं. कहता है राजदूत हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा था. Then I understood the significance of the Ramayana. And I've seen जितने अमीर देश हैं जहाँ जहाँ मैंने सर्व किया है, जाता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों का, that comes because of development, and development comes because of the self confidence. आज भारत भी अपना कॉम्प्रिहेंसिव पावर जान चुका है. टेक इट फ्रॉम मी, 20 साल पहले अमेरिका जाता था, कहाँ से गरीब देश के लोग आए, कौन है. आज मैं जाता फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मिस्टर मूवी, मोदी है उसका, वेलकम वेलकम वेलकम. And they say that we are the only people who spend money. Yeah. So that is something, an entirely new image of India that I'm seeing. Self-confidence, self-belief, self-esteem. Very quickly, our foreign exchange reserves in 1990 were less than $1 billion, billion has 9 zeros, enough for 1 month of imports. आपको मैं बता नहीं सकता, I was that time also working with the then head of government. We were very fragile, we were very exposed. अगर जंग उस समय हो जाता, हमको बहुत तकलीफ. And we had to take money from the IMF. We pledged 67 tons of our gold. Nobody was willing to give us a loan.
it was humiliating. I remember some of us went there and said, sir, we are quitting. Bharat can't do this, you can't pledge our coal. But we had to do it, we needed the money. From $1 billion in 1990, 35 years later, we are close to $1 trillion, which has 12 figures. Just think about these figures that I'm giving you. These are verified figures. 1966, near famine. I don't know if any of you here is of my age or can remember 66. 65 before the war, Barish nahi hui thi. We are a rain-dependent economy. India was on the verge of famine. Indira Gandhi गई थी अमेरिका अनाज मांगने 9 and 11 million tons. न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल अभी तक मेरे पास है, उसमें लिखा था भारत की नई नेता भीख मांगने आते और कमीनों ये नहीं कहते किसी देश के लीडर के बारे में भीख मांगने आते. She came back and said never again. And then came the Green Revolution. We were also told not to eat on Mondays. I don't know if any of you remember. भूख क्या होती है मुझसे पूछो बेटा. 2 साल 66, 67, 104 सोमवार थे. 80 सोमवार में भूखा सोया. I did not eat पूरा दिन. माँ तो माँ होती है दीपक खा ले. My father would say इतना प्यार करता है देश से. 80 Mondays I did not eat. My mother kept a record. And today, do you realize how much of food grain is stored in my godowns? 80 million tons. I can feed the whole world for 25 years. 20, these are not figures that are imaginary, these are real figures. And now we're expecting the harvest and it will probably bring in even more into our storage. Special forces, हमने जब आतंकी हमला हुआ था 2015, 2016 we used special forces, 2019 we used air power, but I was exposing my voice to danger. So in 2025 we used missiles and drones. I did not expose my voice, except the pilots who went in to blast those terror training camps. And in 2025, we fired the Brahmastra Agni 5. This is a missile, sons and daughters of India, all you need to know. It will do what it has to and then it will come back to be recharged. It's the only missile in the world that comes back and says, फिर से मेरे को लोड करना और ठोक के आता. And so what do we tell the दुश्मन जो हमसे जंग करना चाहते हैं? पंगा लोगे तो बहुत मारेंगे. You know, the term superpower was first used by my teacher at Columbia University. I used to attend some lectures. उसका नाम था विंसेंट लोमली, सॉरी विंसेंट फॉक्स, उसको लोमली कहते थे. तो उसने किताब लिखी थी सुपर पावर और उसके अंदर उसने कहा था कि 3 सुपर पावर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन. He wrote this book in 44. I had a copy. Some African leader took it from me, Kamina Nawabaswini. And in that, of the 3 superpowers he mentioned, Soviet संघ तो यमराज की ट्रेन में चला गया, ब्रिटेन जाने वाला, अमेरिका तो कुछ पता नहीं. पर जो पैरामीटर्स उसने दिए थे किताब में कि what constitutes a superpower, आज वो मैं भाई मैं दिल से कह रहा हूँ, वो सब भारत में देख रहा हूँ. What constitutes a superpower? You are children of Bharat, you are outstanding citizens of my mother India. Leadership. चाणक्य ने 2400 साल पहले कहा था. I think Vincent Blomley borrowed from Chanakya. You need leadership. We are the best in the world. For the last 3 years, consistently, Narendra Modi, whether you like him or not is immaterial, is ranked as the most popular leader in the world. Last 3 years by Morning Consult, American consultancy. Diplomacy, we are the best, no question about it. I'm the worst of the lot, but we have brilliant people in the Indian Foreign Service. Then military strength, top 3. These are not my figures. This is Global Firepower Index. Most powerful military, कहते हैं अमेरिका, लड़ना तो आता नहीं, हर जगह मार खा के आते हैं. दूसरा है रूस, वो यूक्रेन में फंसा हुआ है. तीसरा चीन नहीं है. You might think it's China, it's not. What has damaged them badly is their one-child policy. For 30 years. They are recruiting soldiers at 35 years of age. I recruit every 35 in the military
middle age. You can't fight at that. You can't be trained. वो उनकी गलती होगी. So we are number 3. Economy, we say we are number 4. I think we are telling a lie. I'm a regression analyst and economist by training. We've already overtaken Germany. We are number 3 in the world already. I think we are number 6. Declining West, they don't know how to deal with us because Bharat says no. किसको ग्लोरीफाई करते हैं? जब मैं पेरिस में अपनी फर्स्ट पोस्टिंग पे था तो वहाँ फेस्टिवल्स होते थे सत्यजीत रे की गरीबी के, भारत में कुछ नहीं है, भूखे मरते हैं. There used to be national festivals in France. They won't show you today. They cannot defeat us diplomatically, militarily, culturally, ideologically. नहीं हरा सकते हम ना कहते हैं. We don't want it, we don't want it. बहुत नाराज हैं हमसे. Take it from me, you will read all kinds of articles. YouTube में, New York Times, Washington Post, Guardian में पढ़ेंगे, बहुत गाली देते हैं भारत को. पर हम लोग सुनते नहीं हैं. फिर अपनी छाती पीट के वो क्या कहते हैं? They go insane. Now take a look at this. Please absorb this figure. कौन सा देश है जो एक दिन में 34 किलोमीटर हाईवे बनाता है? मैं बनाता हूँ. 12 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाता है? मैं बनाता हूँ. 8 नए हवाई अड्डे एक साल में कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ. पागल हो गए हो कि नहीं? सब वी आर अ पुअर कंट्री. हमको ये करना चाहिए? सब कुछ नहीं करना चाहिए. हम लोग गरीब हैं सर. क्या बोल रहे हैं आप? बोले तो बहुत नाराज हो जाएंगे. जब मेरा निर्माण हुआ था भारत में, when I was manufactured, we had 500 colleges and universities. So 500. Today we have 60,000. 60,000 colleges and universities in the country. And may I tell you something? 15 लाख स्कूल हैं. 2 नए कॉलेज हम प्रतिदिन खोलते हैं. Can you believe this? 2 new colleges every day. And then I'm told, अरे उसका black money है, उसका green money है, blue money है, red money है. अरे क्या फर्क पड़ता है? उसने घर में दबा के तो नहीं रखा. कम से कम एक बिल्डिंग तो बना दी. लोग पढ़ने जा रहे हैं. अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है सर. 34 crores is the population of the United States. I have 34 crore students. Now you can imagine the tsunami that is waiting. Fantastic, fantastic. 34 crores, 98% school enrollment. Look at our figures, 98% for 11. And we train diplomats from 100 countries. I give them lectures. They come and tell us, you guys open your hearts to us. क्योंकि हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. विद्या जितनी बांटोगी उतनी बढ़ती है. वी डोंट कीप आवर नॉलेज टू आवरसेल्व्स. वो ताकत है भारत की. 100% इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आप जानते हैं. वाटर, मोबाइल कनेक्टिविटी, द वर्ल्ड्स बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम. यू नो, एवरी 1 minute one startup gets domestic funding. 250 करोड़ बैंक अकाउंट है आपके पास. 140 करोड़ की आबादी. Think about this. We were supposed to be underbanked. Now we are overbanked. जहाँ चले जाओ वहाँ बैंक जा रहा होगा. 56 crore जन धन account. Locomotives in 1 year. Then Europe and America combined. Not fuzul के figures. They have a tremendous significance. We are developing our railway system. We had said that by 2030, 50% of our energy would come from new and renewable sources by 2030. So we achieved that in July 2025, 5 years ahead of schedule. Think about it. जितनी गाली देनी है देश को दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये तानाशाह है, ये कमजोर है, ये कमीना है, ये है, वो सब कुछ बोलो. पर फिगर्स आप देखते जाइए, you will understand. 100% citizens fully vaccinated. By the way, the world's greatest health insurance scheme is Ayushman Bharat. No country has that level of insurance. We have 50 crore beneficiaries, 70,000 hospitals in the country. और पिछले साल 2024 we gave 2 million medical visas. Americans, Europeans, Africans, Asians coming to India for medical treatment. इसके मायने क्या है? That our hospitals, our doctors, our nurses are the best in human history. I think we owe it to them. The world's largest digital public infrastructure, 125 crore smartphone, 100 crore se zyada internet users. 3 Indians join the internet every second. 2 are from rural India. Transformation देख लेंगे आप सब.
6,000 digital transactions per second. Are we going mad? 6,000 per second? I have an older brother lives in the United States, came to see me, came to stay with me in March. Gets up in the morning, time difference. So मेरे 3 बजे कहता है, दीपक मुझे भूख लग रही है, चुप करके सो जा 3 बजे भूख लग रही है. I'm not going to wake up my wife. I have only one wife, man, 48 years. So I'm not going to wake her up now. तो क्या चाहिए? कहता है यहाँ पे 24/7 convenience store है, मुझे क्या चाहिए? उसने 8-10 चीजें बता दी. I called this Blinkit fellow, and in 7 minutes he was there. So my brother asked me, ये दुकान का मेरे दरवाजे के बाहर है. Then I explained to him the logistics. He says in America it's not possible. It's not. I mean, if you ordered something worth $10 at 2 o'clock in the morning, they charge you $1,000 for the delivery. And look at these guys who do it free of cost. We did 10,000 crore digital financial, cashless financial transactions last year. 10,000 crores. America ने किए थे 300 करोड़, China ने किए थे 1700 करोड़. We did 10,000 crore. Think about it, how quickly and easily we have taken to the digital world. We are leaders in the digital world. By the way, Apple's latest figures came out 3 days ago. 40% of their newest iPhone 17, I think, are made in India. 40%. And he hopes to reach 100% within 2 years. He doesn't care about McDonald Trump. McDonald Trump, he knows. जो भी है उसका नाम. 104 satellites we launched from a single location. What's the big deal? Somebody asked me, I asked Chairman ISRO, I said, so इसका क्या बड़ी बात है? He says, launching them is no problem. How do you prevent them from colliding with each other? And that technology only Bharat has. ISRO has. Nobody else has that technology. Semiconductor mission, the Aratai, it's the new thing we have here to rival Google. And I use that. It's tremendous. It's going extremely well. We accept no foreign aid. We help 150 countries. Think about it. India is no longer aid dependent. We are an aid giver. We are a net donor. First responders in natural disasters. 2024, we brought back 100 tons of our gold from England. I asked the former governor of the Reserve Bank, 30 साल से इंग्लैंड में क्यों रखा हुआ था? कहता हमारे पास जगह नहीं थी. मैं टाइगर मेरे बाथरूम में रख देते. The government owns less than 1,000 tons of gold. के पास 25,000 tons gold होता है. Our daughters have 25,000 tons of gold at the least. This is a conservative estimate. We are complex, we are messy, we are vibrant. किसी की सुनते नहीं हैं हम लोग, वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं. कहते हैं एक भारतवासी है सर 1 opinion, 2 भारतवासी है 3 opinions, 3 भारतवासी है political party में जाती है. We are different from everybody. I'm very proud of this difference. Yet, इतनी अगर कमजोरियां हैं. I'm an economist. How do we manage to develop despite all these सब कुछ गलत कर रहे हैं? फिर ये कैसे होगा? तो आप में से जो इकोनॉमिस्ट हैं आपसे एक अनुरोध है. अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना. I don't know how it's happening. So if you understand, please tell me. I'd like to learn. I'd like to be educated. Total private wealth, by the way, is $8.2 trillion. ये मैडम आपसे पूछ रहा हूँ. $8.2 trillion. मैडम मोबाइल पर बताइए. $8.2 trillion is our total private wealth. 6th largest in the world. Trillion has 12 zeros. Number 1 spend किस पे करते हैं? Beauty parlor पे. जाती है ना कभी कभी. मैं भी जाता हूँ. कौन सी बड़ी बात है? It's amazing. We have 650,000 towns and villages in Bharat, and I have 1 crore beauty parlors. These are figures that are totally incredible. Foreign exchange remittances, 140 billion last year, the highest ever. Highest ever. That is coming into India. The confidence that our people have in Bharat, and of course FDI 80 billion. And we, by the way, this Diwali, आप लोग सबसे पहले अमेरिका में थे, आपने तो खूब मनाई ना, खूब पैसे खर्च किए. $70 billion is what we spent on Diwali. $70 billion. These are figures from the Confederation of All India Traders. And by the way, 3% of what we bought was made in India.
And 2/3 of my GDP comes from consumer spending. Now just look at the way we are racing ahead. Power respects only power. ये चाणक्य ने कहा था, शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की. राइसीना डायलॉग 2025 I was there. यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा डेलीगेशन वो यहाँ आए थे. Not because they like छोले भटूरे in Delhi. They want your market. वो देख के उनके मुंह से दाल टपकती है. इंडियन मार्केट सब यहाँ दौड़ना चाहते हैं. For the first time, और फिर आज हम जो हमें सिखाया गया है, आंख झुका के नहीं, आंख उठा के नहीं, आज हम आंख से आंख मिला के बात करते हैं. I'll conclude very quickly because you ought to go ahead. We are exceptional. The Arab League, you heard of it, is 22 countries. They speak one language, Arabic. We are one country. We speak 22 languages. Tell this to your Arabic friends कि आप 22 देशों में एक भाषा फिर भी आपस में भिड़ते हो और हम एक देश हैं और हम 22 भाषाएं बोलते हैं. We are a role model for multi-ethnic countries around the world. मैं जाता हूँ अफ्रीकन यूनियन की मीटिंग्स में, जो लोग आते हैं 54 countries in the African Union और सब कहते हैं कि India is something we want to be because today India is, well today they are where India was 50 years ago. So we want to develop like. 2-3 हैं कहते हैं हम अभी भी यूरोपियन मॉडल लेंगे. फिर मैं कहता पागल मत बनो, यूरोप इज इतिहास. यूरोप की किताब चाहिए तो जाके हिस्ट्री सेक्शन में ढूंढो और कहीं नहीं मिलेगी. और फिर उनको मैं क्या कहता हूँ, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा हीरो. हीरो आप लोगों का इधर है. You know, very quickly our 4 आजादीज 1947. If anybody tells you we became independent, बकवास करते हैं. Only my body became independent. My mind was totally colonial. When 2022, when Netaji's statue was unveiled, that's the time I really became free. मेम साहब, दूसरे विश्व युद्ध में, including my late father, 25 लाख भारतवासी लड़े थे सर, to save the king emperor. 25 लाख. मेरी क्या दुश्मनी थी हिटलर से, मेरी क्या दुश्मनी थी जापान से, मेरी क्या दुश्मनी थी टर्की से या इटली से, कुछ भी नहीं थी. But I was a colony, I fought. और 25 लाख वो लड़े और 25,000 लेकर ये सिंगापुर से निकलता है. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. नेताजी सुभाष चंद्र बोस is the real hero of that. And then of course when Chandrayaan went, जहाँ कोई नहीं गया था 2023, उस दिन मेरा ज्ञान आजाद हुआ. Sons and daughters of India, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपका क्या धर्म है. एक पठान सरदारनी का बेटा सनातनी है. जिस दिन राम लल्ला अपने घर गए, मेरी आत्मा आजाद हो गई. वन नेशन, एक सभ्यता. पुराने शास्त्रों की हम पूजा करते हैं पुराने शास्त्रों की. मैडम, हम शस्त्रों की पूजा भी करते हैं. शस्त्र पूजा इज ओनली इन भारत. महाभारत में भी जब अर्जुन अपने हथियार लेने जा रहा था, एक सेमेट्री में थे, एक पेड़ के ऊपर, तो उसको माधव भगवान श्री कृष्ण बोला, पार्थ हाथ लगाने से पहले अपने शास्त्रों को, माधव भगवान महादेव को याद कर, पूजा कर अपने शास्त्रों. ये एक हमारी सभ्यता है, इसीलिए तो कोई मिटा नहीं सकता. बहुत लोग आए, बहुत गाजी आए यहाँ. भारत आगे बढ़ता जा रहा है, कोई हमको हाथ नहीं लगा सकता. समय आने पर शस्त्रों का भी हम प्रयोग करेंगे. मैदान में अगर पीछे नहीं है. चाइना ने अपना विजिटिंग कार्ड भेजा था 200 देशों को, उसमें लिखा था वायरस. हमने 200 देशों को भेजा, उसमें लिखा था वैक्सीन. याद है आपको? 200 countries we sent vaccines to. और मैकडॉनल्ड हम कहता है इंडिया हैज बीन ग्रेट, आई विल नेवर फॉरगेट. फेसबुक पे भूल ऑलरेडी गया है कि हम लोग की मदद की थी. बुर्ज खलीफा लिट विद आवर नेशनल पैलेस. मैम, आप लोग तो सब अंग्रेजी बोलते हैं, सन्स एंड डॉटर्स. एक कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, the tough get going. So will you add a line? When the going gets toughest, the Indians get going. इसको आप add करिए. Sons and daughters, during the Chinese virus, not COVID, the Chinese virus, they sacrificed themselves. Sir, my own doctor was 38 years old. I was 71, sir. Died so I could live, sir. उसकी पत्नी को क्या बोलूँ मैं? He went saving me from COVID. हमने इतने टीम्स भेजी विदेशों में, क्यों गए?
मेरे चाचा नहीं है, भतीजा नहीं है, अंकल नहीं है, आंटी नहीं है। क्यों गए हम लोग? क्योंकि हम बहुत अच्छे लोग हैं। आपके घर में जब तकलीफ होती है सबसे पहले आपका पड़ोसी आता है। मैं राइट सर? बच्चे तो बहुत दूर रहते हैं विदेशों से, पड़ोसी आके पूछता है। और लोग आलोचना करते थे कि आपके पड़ोसी आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। वो तो हमारी ताकत है। When I'm in trouble, my neighbor comes and says, भाई कोई मदद मैं कर सकता हूँ। इसीलिए सब हमें क्या कहते हैं, हम लोग इंडिया वाले हैं। You know, our median age is 29 years. Half of India, like me and you, is less than 29, and half like you, sir, a little more than 29. The oldest country in ये क्या बजा रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ यार। The oldest country in the world is Japan. The median age is 49. They have forgotten how to make children. पिछले साल Japanese mothers produced 7.5 लाख बच्चे. The whole country. उसे ज़्यादा तो हम दिल्ली में कर देते हैं। But it's looking at the youth of India. सारी दुनिया this is the youth of India. By the way, just to let you know that 3 countries, Japan, Germany, and Israel, have signed contracts with us for Indian nurses. Those nurses are being trained in the local language. They want our nurses to go and work there. Look at the acceptability that we have. Sikkim earthquake, ये फोटो मैंने ली थी. Sikkimese mother. The road between Gangtok and Siliguri was broken in 300 places because of the earthquake. We asked an Austrian company, sir, this picture I took, I went in 2011. We asked them, how long will you take? They said 3 months to mobilize, 3 months to stabilize, and 3 months to actually repair the place. 9 months. And 9 months, how do you feed your people through helicopters? And the then Prime Minister said, ask border roads. Have you heard of border roads? He said, ask border roads. I made that call. By Patan ka bachcha jhoot nahi bolta. The Director General of Border Roads said, Ambassador, I'll call you back and tell you how long it will take. Let me do a survey. And as I stand before you, 19 घंटे के बाद Director General का फोन आया, सड़क खुल चुकी है। 19 घंटे के बाद वो 9 महीने मांग रहे थे। हमारे 22 बच्चे border roads के शहीद हुए। Sikkimese घर में गया, मैंने कहा, बहन, I'm sorry I've come to your house when your son's body is lying outside, but I haven't cremated him yet. Can I do anything? She's on 26 साल का था, border road में 24 साल का है, उसको border roads में नौकरी दिलवा दी। मैं को बहन, बड़ा बेटा तो border roads में था, छोटा border roads में। यदि बड़ा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, छोटे को मौका नहीं दोगे कि वो भी बताने पड़े। You know, the water came into my eyes. It still does. It still does when I recall that. I haven't met her since. फिर मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लेके कहा, माँ, हम लोग भारतीय इसलिए नहीं हैं कि हम भारत में बसते हैं, हम भारतीय इसलिए हैं कि भारत हम में बसता है। इंडिया में all that I could say to her was, sons and daughters of India, this is my memorial. If you ever go to Kargil, I'm still alive, मेरा भूत नहीं। You'll see it at the feet of the statue of the Lord Buddha in a place called Abadi. वहाँ पे लिखा हुआ है, वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं, बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं। ये सौगंध है इस देश को कुछ नहीं होगा। बहुत देर तक दूसरों ने हम पर हुकूमत की। By the way, in 1924, 101 years ago, 1 लाख गोरों ने 30 करोड़ भारतवासियों पर हुकूमत की थी। How did this happen? Oh, can I divide and rule and all that is fine, but were we willing to be divided? That's how it happened. 1 lakh and we were 30 crores. Never again, never again, never, never, never again. अब हमने एक कसम खाई है सर, मैंने और मेरे परिवार में, अब हम लिखेंगे इस देश का इतिहास ताकि कोई दूसरा ना लिख सके। ये हमारे बच्चों ने भी कसम खाई है, जिनसे मैं मिलता हूँ कि ये कसम खाओ, ये दोबारा नहीं होगा कभी। And they all promised me that we will write it ourselves. मैं अपने आँखों से इस दुनिया की तस्वीर लिखता हूँ, नहीं पैदा हुआ कोई नहीं रोक सकेगा नए भारत को। आप सबसे अनुरोध है, you are thought leaders, you are outstanding children of India, spread the word,
We are unstoppable. Don't believe the nonsense that is pervaded by the West. इंडिया चला गया है, ये भारत है, इसके सामने कोई नहीं टिक सकता. To विकसित भारत 2047, we are rushing there. I will not be alive, but मैं देखना चाहता हूँ sir what developed India will be like. तो मैं एक अनुरोध करता हूँ विकसित भारत से. एक बार आ जाए. Let me see what you are like. You know, I want to ask you this question. God is Bharati. I'm convinced Bhagwan bhi Bharatiya hai. May I ask you a question? Will you answer? How's the Josh? How's the Josh? ये दिल मांगे more. ये दिल मांगे more. Do you know why ये दिल मांगे more? No. Oh. Thank you very much. Thank you everybody. Standing ovation. He deserves a standing ovation. Fantastic. God bless you. Fantastic energy. I'm sorry I took more time. Really wonderful. Sir, I'm sorry I took so much time. So we request you for a group photograph. One group photograph, sir. It's just a memory for us. I request the National President and his father for the stage and Mr. Deepak Vohra, the National General Secretary, to kindly come up on the stage for a group photograph. Good. Also, National President Mr. Image Radha, I request everyone for a group photograph. People, you can sit down. ये मैडम ऐसा रूप मारती है. इनका पूरा नाम मालूम है आपको? Wahida Khan. वाहिदा Adolf Hitler पठान. Ladies and gentlemen, you can take your seats. Sir, I make an humble appeal to put forward my vote of thanks. No matter how much I went through my dictionaries, I fell short of words, but I would just say thank you. I बोल सकती हूँ. जैसे आप enter हुए पूरा वक्त जब आप सेशन ले रहे थे, तो 4 लाइनें मुझे बोलनी है आपको. कि वो यूं मुस्कुराए हम अपने होश खो बैठे. कि वो यूं मुस्कुराए हम अपने होश खो बैठे. हम होश में आने ही वाले थे, वो फिर मुस्कुरा बैठे. Token of gratitude to sir. ये मेरी बेगम ने सुन लिया, पिटाई हो जाएगी. Sir, मैं sorry बोल दूँगी. Thank you, sir. Thank you. And I think this is from everyone. Each one in the hall present here would agree. Thank you once again for such amazing session. This is Bharat. 20 minutes. Thank you. Thank you, ma'am. इसकी फोटो मत लेना, इनकम टैक्स वाले मांगेंगे.